Today we are going to study a convergence, a type of a convergence of a series, and that is known as absolute convergence. Why it is important, you will get to see in this lecture. That why we have to study it separately. Why this is a separate concept. The first thing that you might notice is that let us consider this series minus 1 to power n plus 1 upon n and from 1 to infinity. And this series is convergent. This is convergent. Okay. But what now I'm going to do? I notice here that the nth term of this series is given by minus 1 to power n plus 1 upon n. And if I find the modulus of this nth term, modulus of this nth term is going to be 1 by n. And then the series corresponding to the uh, terms of this given series by taking their absolute values is this series mod of xn. The series of absolute values of the terms of the given series. This series comes out to be the very known series 1 by n, and we know that this is a harmonic series and it is divergent. So, but this is not true every time. This is not true every time. There are series, because if instead of in the given series, if I take instead of in denominator, if we take n square, then the corresponding series by taking the modulus of the terms of the given series will be 1 upon n square, and then in that case it is not divergent, it is convergent. So based on this, we give a definition of a new type of convergence. This is known as absolute convergence. But how do we define absolute convergence is given in this definition one. We say that the series summation xn is absolutely convergent if the series summation mod xn is convergent. Simple. This given series will be known as absolutely convergent. This will be known as absolutely convergent if the series obtained from this series by taking the modulus of the terms of this series is convergent. And we say another type of convergence we say that the series summation xn is conditionally convergent if the series summation xn is convergent, but the series obtained by taking the modulus of the terms of the given series is divergent. So these are the two types of convergences you need to have in your mind. One is absolute convergence, and another is conditional convergence. Absolute convergence. In absolute convergence, you have this series is convergent. This is convergent. Okay. But in conditional convergence, xn without taking the modulus, this is convergent, but the term of absolute values is divergent. This is the condition. And as an example, the series that I just gave you an example of, I have written it in the top also. We know that this series is convergent, but the series of its absolute values 1 by n is divergent. So then we can say that this series summation minus 1 to power
n plus 1 upon n is conditionally convergent series. This is a conditionally convergent series. We are going to see the examples of absolutely convergent series also. For example, let us look at. So this is an example that which I already told you. It's a conditionally convergent. And another, let me take another some simple example. This is minus 1 upon n plus 1 upon n square. And let us look at its series obtained by taking the absolute values of the terms of the given series. And if you take the absolute values, then I get this absolute value of minus 1 to power n plus 1 upon n square. And it is summation. Absolute value of minus 1 to power anything is 1. It is 1 upon n square. And we know by p-test that this is convergent. Hence, this is an example of a absolutely convergent sequence. But here is a reminder to note in example 3. What example 3 says that if we have a sequence xn, and if we have a series xn, and if the terms of this series are non-negative, that means each xn is greater than or equal to 0, then you know that the modulus of xn is always xn. So in that case, the convergence of xn and the convergence of mod of xn, they can't be different. क्योंकि आपके पास कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इन दोनों सीरीज की साथ में होगी जी, क्योंकि दोनों सीरीज सेम है इस केस में. xn इक्वल्स टू मॉड xn है बिकॉज आपके पास नॉन नेगेटिव है xn, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू इज बिकॉज xn का जो एब्सोल्यूट वैल्यू इस केस में विल बी xn. तो that means absolute convergence and convergence are the same things when you are considering the series of non-negative numbers. Is it okay? Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. So here, but in general, this was the example 3. In example 3, we were talking about the series with non-negative. Be careful, this is non-negative real numbers. But in general, it is not always necessary that the terms of the series are always non-negative. And there might be negative, there might be positive as well as negative terms in this series. So in general, what is the relation between absolute convergence and convergence? This is a relation that if a series is absolutely convergent, then it is always convergent, but we are going to see that its converse is not true. And the first example for its converse, you can get it from this example 2. Because in this example 2, this series is convergent, but it is not absolutely convergent. That's why you have this concept of a conditionally convergent series. That's done. Its converse part is okay. इसकी counter example भी हो गई. Let's look at the now the proof which we are going to prove that a absolutely convergent series is always a convergent series, and this is what is stated in theorem 4. It states that if a series in R, it means that terms of the series are real numbers, is absolutely convergent, then it is convergent also. So now we are given a series which is absolutely convergent. Suppose we have this series xn, and suppose this is absolutely convergent. When we say that this is absolutely convergent, that means the series of its absolute values is convergent. This is absolutely convergent. Now let's use the definition of convergence. We are not going to use the definition. We are going to use the Cauchy criterion of convergence. And for according to Cauchy criterion of convergence, whenever we choose an epsilon greater than 0, then there will exist some natural number depending upon epsilon. That number here is being denoted with m, such that whenever we take indices m greater than n greater than equal to m, then because now the terms are mod of xn,
So mod of xn plus 1 plus mod of xn plus 2 so on up to mod of xm. This is not sum, but this piece of sum is going to be less than epsilon. But we want to show, we want to show that the series xn is convergent, and to show that xn is convergent, what we have to show, what we require, our requirement is to show that mod of x uh, n plus 1 plus mod of xn plus 2 plus so on up to mod of xm is less than epsilon for all n and m, for all m greater than n greater than or equal to some number. That number can be anything depending upon epsilon. We have to show this thing. Now let's look at that whether we can get some help from this equation 0.1 or not, because we have begun with some epsilon and we have already obtained some m epsilon. And let's look at that whether this m epsilon will work or we need some other thing. But actually this m epsilon will work because of triangle inequality. Let's look at this. We want to show this number to be less than epsilon, but the relation of this sum and this sum is given by this triangle inequality. You know triangle inequality. Triangle inequality is if you take two real numbers, then the modulus of their sum is less than or equal to sum of the modulus of individual term. And this is not only for true, this is true for whatever number of terms you take. Finitely many terms. If you have finitely many terms, then the absolute value of their modulus, absolute value of their sum is less than or equal to sum of their x1 plus mod of x2 plus so on plus mod of xn. Okay, I sometimes will say mod and sometimes absolute value, but both are the name that work for this. So we are going to use this inequality to establish this relation, and this is the inequality that is given here. Look, we have xn plus 1, xn plus 2, so on up to xm, and its mod. And by triangle inequality, it is going to be less than or equal to mod of xn plus 1 plus mod of xn plus 2, so on, plus mod of xm. And what is this on right hand side here? This right hand side here is a term in the left hand side of equation 0.1. And we know that this is less than epsilon if we choose m and n to be greater than or equal to this capital M. So from that equation, we get to see if this number is less than epsilon, then this xn plus 1 plus xn plus 2 so on up to xm, its absolute value is also going to be less than epsilon for every m greater than n and greater than or equal to m, capital M. And hence, by Cauchy criterion of the convergence of this series, it follows that this series x summation xn is convergent. Is it okay? Do you have any questions on this? सर बोलिए। सर पीछे एक क्वेश्चन था बोलो। सर एग्जांपल जो आपने 2 कराई सर वो कंडीशनली कन्वर्जेंट कैसे हुई सर वो नहीं समझ आ रहा अच्छा, कंडीशनली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन आपको समझ आ गई? यस सर दैट मीन्स उसमें सीक्वेंस सीरीज कन्वर्जेंट है बट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। देखिए, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ये आपको अभी समझ आएगा या नहीं आएगा, बट पीछे हमने इसको शायद डिस्कस किया। अगर नहीं किया तो डोंट वरी, हम इसको आगे टेस्ट से चेक कर लेंगे। दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, दिस इज कन्वर्जेंट, यू टेक इट। अभी इसको मान लो कि ये कन्वर्जेंट है, बट ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपके पास एक्स एन क्या है, यहाँ पर एक्स एन आपके पास है -1 टू पावर n प्लस 1 अपॉन n। तो जब एक्सएन की हम एब्सोल्यूट वैल्यूज लेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्सएन क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ एक्सएन होगा मॉड ऑफ -1 टू पावर n प्लस 1 अपॉन
एन एन का मॉड तो एन ही रहेगा क्योंकि एन पॉजिटिव है। अब -1 टू पावर n+1 दो ही वैल्यूज ले सकता है, या तो -1 होगा या 1 होगा। तो जो भी वैल्यू होगी तो उसका मॉड तो हमेशा 1 होगा, तो ये आएगा 1/n। तो अब इसके कारस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनेगी, इसके कारस्पॉन्डिंग सीरीज, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज की जो सीरीज बनेगी, दिस इज अ सीरीज 1/n। एंड ये हमने प्रूफ किया पीछे कि ये जो सीरीज है 1/n वाली, सॉल्यूशन 1/n वाली, ये कन्वर्जेंट नहीं है, ये डाइवर्जेंट है। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है, तो कन्वर्जेंट है, दैट्स व्हाई इट इज अ कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। Okay, let's look at something different now. What is this different? Uh, there is a concept of grouping of terms, कि एक सीरीज गिवन है तो आप उसकी टर्म्स को ग्रुप कर सकते हैं। तो जब आप उनकी ग्रुपिंग करोगे तो क्या आपके पास एक सीरीज का जो बिहेवियर है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंट, जो भी बिहेवियर उसको होगा, क्या वो चेंज होगा या नहीं होगा जी। ठीक है, जैसे हम ये एक सीरीज ले रहे हैं, इसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं। ठीक है, ग्रुपिंग कैसे कर रहे हैं, 1 - 1/2 को एज इट इज रख रहे हैं। ग्रुपिंग कैसे क्या करना होता है, ग्रुपिंग में आपको टर्म्स का ऑर्डर चेंज नहीं करना है जी। देखिए, जो जो टर्म जिस प्लेस पे है उसकी प्लेस चेंज नहीं होगी, बस हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट्स इंसर्ट करेंगे, हम ब्रैकेट्स इंसर्ट करेंगे। तो अब इसमें क्या है, इसमें भी दो तरह की सीक्वेंसेस को हमने सीरीज को देखना होगा, कि अगर कोई सीरीज जो है वो ऑलरेडी कन्वर्जेंट है तो उस पर ग्रुपिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ब्रैकेट्स बीच में इंसर्ट करने से क्या फर्क पड़ेगा, और जो सीरीज डाइवर्जेंट है उस पर डिफरेंट इफेक्ट पड़ेगा जी। ठीक है, तो पहली जो थ्योरम है, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट्स प्रूफ, अब जस्ट इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए रख लीजिएगा कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट इज इन थ्योरम 5। फर्स्ट इन वी डिस्कस ग्रुपिंग फॉर अ सीरीज विच इज ऑलरेडी कन्वर्जेंट। व्हाट दिस थ्योरम सेज दैट कि जो सीरीज ऑलरेडी कन्वर्जेंट है उस पे ग्रुपिंग से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वो स्टिल कन्वर्जेंट होगी और वो सेम लिमिट को कन्वर्ज करेगी जी। दिस इज द थ्योरम, इफ द सीरीज समेशन xn इज कन्वर्जेंट, then any series obtained from it by grouping its terms is convergent and converges to the same limit. सो कन्वर्जेंस बिहेवियर यहाँ से इसीलिए कन्वर्जेंस इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कन्वर्जेंस जो होती है, कन्वर्जेंस इज अ स्मूथ बिहेवियर माना जाता है उसको, क्योंकि जब कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। दैट मीन्स आपके पास सीक्वेंस है सीरीज, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट, सीरीज कन्वर्जेंट है, तो we can write x1, we can introduce bracket x2 plus x3 plus uh, x3 plus, इस तरह से कर सकते हैं। वी कैन इंट्रोड्यूस x4, वी कैन इंट्रोड्यूस, कहीं पर भी ब्रैकेट्स हम करते हैं, कुछ भी दो टर्म्स को आपस में ग्रुप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम उनका ऑर्डर चेंज नहीं करें। और फिर इसी तरह से आप समेशन के बहुत सारी और चीजें हम इसके कन्वर्जेंस बिहेवियर से चेक कर सकते हैं। बट ये थ्योरम जो है, ये थ्योरम ध्यान रहे, ये थ्योरम होल्ड करती है जब आपकी सीक्वेंस ऑलरेडी कन्वर्जेंट है। दिस बिहेवियर इज एक्सप्लेन्ड ओनली फॉर दिस सीरीज which is already convergent. Now the next question is कि what about the series which is divergent? तो उस पे ग्रुपिंग का इफेक्ट क्या होगा जी। तो let us see, we have this example also here, as we have already seen कि ये जो सीरीज है -1 to power n जो है, दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है। ठीक है, वी नो दिस थिंग। नाउ लेट्स लुक एट के इसकी, पहले इसको एक्सपेंड करते हैं। ये सीरीज है क्या, ये सीरीज है, पहली टर्म इसकी -1 है, फिर 1 है, फिर -1 है, फिर 1 है, -1 अल्टरनेटिंग 1 एंड +1 है।
इस तरह से इसकी। अब देखिए अगर मैं इसकी पेयरिंग करूं, अगर मैं ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस करूं इस तरह से ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस करूं, या anyways let me introduce a bracket in different way. इस तरह से ब्रैकेट फर्स्ट -1 को एज इट इज रखते हैं, 1 -1 इस तरह से ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। 1 -1 प्लस इस तरह से होता जाएगा 1 -1, इस तरह से चलते जाएंगे। तो यू सी आपके पास क्या आ गए, उस केस में तो आपके पास -1 ही बचेगा, बाकी सारी की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। बाकी सारी की सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी अगर, तो ये तो -1 बनेगा। तो उस केस में तो ये कन्वर्जेंट हो गया ना, उस केस में तो ये कन्वर्जेंट हो गया, तो ये डिफरेंट बिहेवियर आ गया ना। सीरीज खुद डाइवर्जेंट है, लेकिन आप ग्रुपिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ग्रुपिंग से क्या हो रहा है, ग्रुपिंग से दिस इज नॉट, ये सारी पॉसिबल ग्रुपिंग नहीं, बट वन ऑफ द ग्रुपिंग है जो वन ऑफ द वे, तो उससे ये कन्वर्जेंट हो रही है। इज इट ओके? सर हाँ जी। सर लेकिन ग्रुपिंग करने से तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए सर। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ हो रहा है ना, डाइवर्जेंट के केस में हो रहा है ना। ये देखो ना, दिस इज अ लाइव एग्जांपल हियर। हाँ, बट अगर सीरीज कन्वर्जेंट होती तो अगर हम फिर ग्रुपिंग नहीं भी होती। करते बोलो। फिर भी तो वो जीरो को ही जाती, -1 और +1 कैंसिल होते जाते ना। नहीं कैंसिल होते, नहीं कैंसिल होते, ये इनफिनाइट सीरीज है। आप देखिए, आप इसके पार्शियल सम्स बनाते जाइए ना, आप इसके पार्शियल सम्स की करने, सिंपल सा टेस्ट होता है आपके पास सीरीज का। सीरीज कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर कन्वर्जेंट है अगर सीरीज, तो उसकी nth टर्म की जो लिमिट है वो 0 होनी चाहिए। तो यहाँ xn क्या है, यहाँ xn आपके पास -1 टू पावर n है। तो अब मुझे बताओ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, -1 टू पावर n कभी 0 हो सकती है क्या? ये 0 हो सकता है क्या? नो सर। तो सर बस सिंपल सा टेस्ट है। तो जो आप कह रहे हैं, अगर उस तरीके से आप देखो तो उस तरीके से भी ये 0 नहीं हो रही है, क्योंकि आप पार्शियल सम इस सीरीज का फॉर्म करोगे तो S1 में आएगा -1, S2 में आपके पाएगा -1 + 1, दिस विल बी 0, बट S3 में क्या आएगा, S3 में आएगा -1 + 1, -1 इज -1, ठीक है ना। सारी टर्म 0 नहीं हो रही है। S4 0 हो जाएगा, S5 0 नहीं होगा, ठीक है। S5 आपके पास अगेन -1 आएगा। तो इस तरह से आपके पास जो सीक्वेंस बनेगी, अल्टरनेटिंग इसकी पार्शियल सम की सीक्वेंस होगी, वो होगी -1 0 -1 0 -1 0। तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है ही नहीं है। तो हमारी डेफिनेशन क्या है कन्वर्जेंस की? कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है कि आपके पास सीरीज कन्वर्जेंट तब है अगर उसके पार्शियल सम्स की सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो बट इसके पार्शियल सम्स की सीक्वेंस देखो, ये कन्वर्जेंट है ही नहीं। बट इज इट ओके? यस सर। Okay, then there is another way. So there is another way of things. In grouping, what we did, हमें वहां पर ऑर्डर चेंज नहीं करना था ना। ग्रुपिंग में हमें सर ब्रैकेट्स थी। अब नेक्स्ट है रीअरेंजमेंट करेंगे हम सीक्वेंसेस का, सीरीज का। रीअरेंजमेंट का मतलब है कि आपके पास इस तरह से सीरीज है, तो आप उसकी टर्म्स की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। दैट मींस ए वन ऑफ द, अगर ये सीरीज है x1 + x2 + x3 + so इस तरह से सीरीज है। तो अब मान लो मैं इसको एक ग्रुप, एक इसकी रीअरेंजमेंट बना लेता हूँ।
रीअरेंज करता हूँ टर्म्स को, रीअरेंज मीन्स यू हैव टू रीअरेंज द टर्म्स। तो मैं पहले लिख लेता हूँ x2, फिर x1, x3 प्लस x4, x5, x1, x2 प्लस x3, सॉरी इस तरीके से, लेट्स बी लिटिल मोर प्रिसाइज, सिंपलर वन। तो ये है आपके पास गिवन x1 प्लस x2, x3, x4, टर्म्स इस ऑर्डर में है बिल्कुल। तो ये एक जनरल अरेंजमेंट है इसका। लेट अस लुक एट अनदर अरेंजमेंट। मैं इसको लिख सकता हूँ, इवन टर्म्स पहले लिखूंगा, x2, x1, x4, x3, x6, x5, इस तरीके से भी रीअरेंज है। प्लीज अपना माइक, रोल नंबर 14, माइक माइक बंद करो अपना। रोल नंबर 14, let me mute this person. ये है कौन 14? ओके, एनीवेज, तो इस तरीके से यू कैन अरेंज। दूसरे एक और तरीके से आप रीअरेंज कर सकते हो। देर आर इनफाइनाइटली मेनी वेज जिस तरह से आप टर्म्स को रीअरेंज कर सकते हो। नाउ आप हो सकता है आप इस तरीके से लिखो x1 प्लस x3 प्लस x5, पहले सारी की सारी ऑड ऑड प्लेसेस की टर्म्स लिखो, फिर आप इवन प्लेसेस की टर्म लिखो। तो दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। आप टर्म्स की पोजीशन ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। एंड देन नाउ द क्वेश्चन इज, क्योंकि जब हर एक रीअरेंजमेंट से यू विल गेट अ न्यू सीरीज, हर एक रीअरेंजमेंट से यू विल गेट अ न्यू सीरीज, एंड देन द क्वेश्चन इज कि जब हर एक रीअरेंजमेंट आप करोगे सीरीज की टर्म्स का, तो जो न्यू सीरीज होगी, तो जो ओरिजिनल सीरीज से, जिस ओरिजिनल सीरीज से उसको रीअरेंजमेंट करके बनाया गया है, उस ओरिजिनल सीरीज के बिहेवियर के साथ वो न्यू सीरीज कैसे रिलेटेड होगी। एंड द क्वेश्चन इज, here is one of the example theorem। ये कहता है कि सीरीज या तो देखें ना, अगर कन्वर्जेंट सीरीज है तो और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है तो उस केस में कोई भी रीअरेंजमेंट ले लो आप, उसकी टर्म्स को जैसे भी रीऑर्डर कर लो, उसके टर्म्स के रीऑर्डर पे कन्वर्जेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट स्टेट्स दैट देन एनी रीअरेंजमेंट yk of xn converges to the same value। That means if your series is absolutely convergence, you can see now that absolute convergence is a powerful convergence। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कहती है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज से, रीअरेंजमेंट से, ग्रुपिंग से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता सीरीज की कन्वर्जेंट पे, वो कन्वर्जेंट ही रहेगी, और एवरी रीअरेंजमेंट ऑफ दैट सीरीज विल कन्वर्ज टू the same value to which the series is converging। But this kind of behavior is not seen in the case of the series which is not absolutely convergent, which is conditionally convergent। तो कंडीशनली कन्वर्जेंट का क्या है? कंडीशनली कन्वर्जेंट का आई हैवंट स्टेटेड दिस थ्योरम, बट कंडीशनली कन्वर्जेंस में क्या है? कंडीशनली कन्वर्जेंट में कहता है कि अगर सपोज आपके पास, लेट मी टेक, लेट x be be a conditionally convergent series। Suppose this be a conditionally convergent series, then the result is states that you take any arbitrary real number, let C be any arbitrary real number, then there exists a rearrangement
There exists a given convergent series Xn such that that arrangement is going to converge to that real number C. आप इस थ्योरम की पावर को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, व्हाट इट इज गोइंग टू स्टेट, इट स्टेट्स दैट आपके पास कोई भी रियल नंबर है, आपकी सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है, लेट मी, आपकी सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है, आपके पास जितने कोई भी रियल नंबर ले लो, 1, 1.5, 1.7, you take any real number, you take any real number, 1000 or any other real number, 10 to power 10 to power 10, you take any real number, इट्स से अगर सीरीज आपकी कंडीशनली कन्वर्जेंट है, it states that corresponding to every real number there will be a rearrangement, there will be a rearrangement such that वो rearrangement क्या होगी, वो rearrangement उसको कन्वर्ज करेगी। इस सीरीज की टर्म्स को आप रीअरेंज कर पाओगे, इस तरीके से रीअरेंज कर पाओगे, जो न्यू सीरीज फॉर्म होगी, दैट न्यू सीरीज विल कन्वर्ज टू द गिवन रियल नंबर, फॉर एग्जांपल 1, फिर 1.5 के कॉरस्पॉन्डिंग यू विल हैव अनदर रीअरेंजमेंट सम, इसकी टर्म्स की यू विल हैव अनदर रीअरेंजमेंट, इसकी टर्म्स को फिर से एक डिफरेंट रीऑर्डर कर लोगे, दैट विल कन्वर्ज टू दिस। इसी तरह से 1.7 लोगे तो यू विल हैव अनदर rearrangement of its terms which will converge to 1.7 and so on. For every real number you are going to get a rearrangement. That means how many real numbers you have, आपके पास रियल नंबर्स कितने हैं? इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल नंबर, इनफाइनाइट से भी ज्यादा है, that is uncountable number of real numbers. That means आपके पास एक गिवन सीरीज की रीअरेंजमेंट्स कितनी पॉसिबल हैं? गिवन सीरीज हैज uncountable number of rearrangements, uncountable number of rearrangements. क्लियर है? क्योंकि हर एक रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक रीअरेंजमेंट आपको मिलेगी ना, ऐसा थोड़ी ना कि एक सेम रीअरेंजमेंट जो होगी वो 1 को भी कन्वर्ज करेगी और वो 2 को भी कन्वर्ज करेगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि है तो रीअरेंजमेंट, है तो सीरीज है ना, तो सीरीज जब भी कन्वर्ज करेगी वो एक यूनिक वैल्यू को ही कन्वर्ज कर सकती है। तो ये 1 और 2 को नहीं, दैट मीन्स आपके पास एक साइड सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, एक साइड आपके पास सारी रीअरेंजमेंट्स हैं, तो आपके पास क्या होगा, देयर विल बी अ 1-1 correspondence between the rearrangements of a given conditionally convergent series and the set of real numbers. Is it okay? दो रीअरेंजमेंट्स की सिंगल इमेज नहीं हो सकती? दो रीअरेंजमेंट्स की सिंगल होगा ना, लेकिन कंडीशनली कन्वर्जेंट में पॉसिबल नहीं है। कंडीशनली कन्वर्जेंट में, हाँ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट में होगा जी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा ना, क्योंकि अगर आपके पास if your series is absolutely convergent, if this is absolutely convergent, तो उसमें हमने अभी स्टेट करा ना वो थ्योरम, ये तो उसमें क्या होगा कि उसमें कोई भी रीअरेंजमेंट लोगे वो कन्वर्ज करेगी उसी को जिसको एक्स एन कन्वर्ज करती है। एंड लेट, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एंड लेट सपोज ये सीरीज जो है, ये सीरीज कन्वर्ज करती है एक्स को, देन फॉर एनी रीअरेंजमेंट, दो डोल ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੇਰੇ ਹੁਣ ਡੋਲ ਉੱਥੇ ਛੱਡੀ ਆਏ ਰਾਤੀ ਦਾ ਡੋਲ rearrangement yn of xn, आपके पास ये जो रीअरेंजमेंट है, दिस विल आल्सो कन्वर्ज टू x। तो उस केस में तो सारी की सारी रीअरेंजमेंट्स x पे कन्वर्ज करेंगी, सारी की सारी रीअरेंजमेंट्स का सेम ही पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी। इज इट ओके? इज इट ओके? So I think if you have